Hello, welcome friends. Today, like our last video, we covered some of the basics of SAP like ECC and S4HANA. So I explained the basic concepts and components of ECC and S4HANA, like how they differentiate from each other, and what are the advantage of S4HANA over ECC, and how the SAP Fiori fits over S4HANA. So today I want rigidly to level you up regarding the main basics business processes included in SAP, which is AP, accounts payable, which is also known as vendor management, and accounts receivable, which is also known as customer management. So clearing in start of video, I want to clarify that AP is liability for a company. So let's say you have an XYZ company. So AP is the liability for company because our company is payable to vendor. So vendor is our basically seller who gives the goods or certain products on credit for us to pay it later. And similarly, customer, which our company like follows a business setup, taking from vendor and selling it to customer. So customer indirectly becomes our assets. So we are we are tendable to receive cash or cash at bank or cash in hand from the customer. So it indirectly is our asset, so we are going to receive something in our banks, right? So it becomes our asset. So let's start and let's roll on the quick intro of the video. So welcome to my channel. This is Aditya this side. So let's have a company called ABC Electronics. So we decided to enter in the market. So do you think your company's main product is apart is laptop? So what do you think your first step might be to track and enter into a business, or start a business segment? So you'll need a certain components for a laptop, right? So you need to find a right or adequate vendor for the same. Like I suppose want to have a laptop screen. Like I need a laptop screen, right, to manufacture a laptop and all other things subsequently. So let's say just laptop screen, I will need to track down a vendor, like say a Dell company, a Dell basically. So what happens? I need to inform the system. SAP is a system, right? So system needs to know who the supplier or who the vendor is. Okay. So I will enter. I will create a vendor data in my system. Okay. So I will technically man over vendor master in the in the SAP system, and I will in vendor master it includes all the vendor data like name of the company, how much units the vendor is going to sell, or what type of screens it is. So like that, where the business of the vendor is located, etc. All the stuff like that. So next is my order gets noted down, which is I generate a purchase order. Okay, so how many units of a screens I need, how much in how much time it needs. So it comes on the purchase order, and next is the goods receipt. So firstly, there are two types of receipt: invoice receipts and good receipt. Good receipts is nothing but the when the screens or products or goods come into your warehouse, it is known as goods receipt. First, the uh, product that you ordered from a vendor, it arrives at your doorstep, so it is goods receipt. Like example, if you say order anything from Amazon, it arrives at your home, say it becomes your goods receipt, CR in that. And the secondly, after goods you receive, there is a invoice, like a process, a bill. So a bill is nothing but invoice receipt. It is an invoice. So in this, it is a vendor payment invoice. Okay. So it goes like you create a vendor, then you create a vendor master data in SAP to store all the vendor information. Then you create a goods receipt. Then you receive an invoice receipt from the vendor, right? So vendor is your basically a liability. You have to pay him for the product he is meant to give you. Okay. So then it is a payment to vendor, and after the payment to vendor is clarified, it is settled, which is various types of payment: automatic payment program, payment during. Okay, so basically is A53 in SAP, which clears vendor payment. Then after all, once first stage of your company and your business is complete, like your company then starts building a laptop, assembling a laptop with that laptop skills. So here you get your first step is officially complete. So that's it. So guys, let's just say that you have a laptop ready, totally ready in your company. Now you just have to sell it to something, a customer, right? Like suppose me. But in here you have a ABC business. You are a business company.
So like you have done your manufacturing part, you have completed, you have the product ready in your shops or your workplace. So you just have to now sell it. So you have to track down a required customer, okay, local customer. Let's say Reliance is your customer, Reliance Digital. So they want a subsequent requirement and subsequent units of your laptop they want to purchase from you. Okay. So you create a customer master like a vendor master for sale. Okay. You in customer master like vendor master, the customer details are stored like Reliance Digital, where it is located, how much units they required from your company, let's say like just 50 units. Okay. Then after that, the second part is you generate a sales order. So sales order is exact details of a transaction, like how which screens they require, the screen model number, the subsequent 50 units of a screen, 1 unit price, what it will be, like 1 unit price say 10,000, so 50 units into 10,000 कितना 50,000, तो सब सेल्स ऑर्डर में आपके रिकॉर्ड हो जाएगा. देन इज जनरेटेड कस्टमर इनवॉइस. कस्टमर अपने को बिल भेजता है, तो अपन ने कैसा उसको पे किया, तो अपन सिमिलरली हम कस्टमर को बिल भेजेंगे, which is nothing but customer invoice, which can be named as FB70 in SAP system, which is accounts receivable. Okay. तो उससे अपने को पैसा आएगा. Okay. So that's it. So ऑब्वियसली उसके बाद पेमेंट होगा, जैसे उसको बिल रिसीव होगा वो वहां से पेमेंट करेगा इन F20, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर क्लियरिंग, कस्टमर पेमेंट. तो पेमेंट होने के बाद our end-to-end transactions are done basically. So the final act of thing that we do is कि भाई तीन चीजें होती है इसके बाद. अपन अपना बैंक बैलेंस अपडेट करेंगे क्योंकि कैश रिसीव हुआ है और सम ऑफ इसमें एसेट्स अपने को आए, तो अपन को रिकॉर्ड करेंगे बैंक बैलेंस में जाके अपडेट करेंगे सिस्टम में. और उसके बाद होता है मंथ एंड क्लोजिंग, जैसे जितने भी एडजस्टमेंट क्रेडिट्स है डेबिट्स है जितने भी अपन ने दिए या फिर जो रिसीवेबल्स है उसमें कुछ ट्रेनर एडजस्टमेंट है, जैसे डूनिंग जैसे बोलते हैं ना, कुछ क्रेडिटर्स अभी भी बाकी है, तो वो सब उसमें सेटल हो जाएंगे मंथ एंड क्लोजिंग. और उसमें कभी कभी आपका +4 लास्ट होता है कि आपको एडजस्टमेंट पीरियड सेपरेट से दिया जाता है. और फिर आता है आपका एसएपी इंटीग्रेशन. So before also that, the basics last step of this all subsequent module is the generating reports, financial statement reports. उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपका बैलेंस शीट सब आ जाएगा, तो आपको आपका कंपनी का नेट प्रॉफिट नेट वैल्यू पता चल जाएगा. प्रॉफिट यू मेड, द लॉस यू मेड, एक्स वाई जेड एवरीथिंग, एंड इसके बाद एक जो फाइनल स्टेप आता है जो एसएपी रिलेटेड है वो है एसएपी इंटीग्रेशन. सो गाइस अभी मतलब जो लास्ट स्टेप है अपना एसएपी का, एसएपी एफआई इंटीग्रेशन, उसमें कुछ नहीं है. जैसे अपना बहुत सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, सब्सिक्वेंट मॉड्यूल छोटे छोटे, वो सब इंटीग्रेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. तो उनको कनेक्टेड रखना उतना ही जरूरी है आपको, अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रैक करने हैं तो कहाँ से क्या परचेस हुआ और इसका क्या एक्सपेंस है, तो वो ट्रैक करने के लिए वो उतना ही जरूरी है जितना वेंडर मास्टर डेटा और कस्टमर मास्टर डेटा. सो इसमें होता क्या है ना कि जितने भी सब मॉड्यूल, जैसे समझ लो एमएम ले लो, मटेरियल मैनेजमेंट, जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है, तो उसमें गुड्स आते हैं, तो गुड्स उसके साथ फाइनेंस के साथ टैली होते हैं कि गुड्स का रेट क्या है, कितने कॉस्ट पे आए थे, कितना टैक्स लगा. ठीक है. तो एफआई उसको रिकॉर्ड करता है, उसके अकाउंटिंग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करता है. इसलिए वो एफआई के साथ मतलब फाइनेंशियल मॉड्यूल जो होता है वो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट किया जाता है इसी चीज के लिए, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि भाई ये गुड्स मैंने क्या रेट पे खरीदे, किससे खरीदे, क्या है क्या नहीं है, वो बस. और सिमिलरली सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सेल्स ऑर्डर कब जनरेट हुआ, सेल्स कैसे हुए, सेल्स का मीन क्या था, सेल्स के अपने पास इनकमिंग में कैसे क्लियरिंग हुआ, तो ये सब जो डिटेल्स है वो सेल्स ऑर्डर स्टोर करता है बेसिकली. जितना भी आउटगोइंग था, इनकमिंग था, आउटपुट इनपुट बेसिकली होता है ना, आउटपुट सेल्स इनपुट सेल्स, तो उसके लिए वो जरूरी है. तो ऐसे सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिसको इंटीग्रेट किया जाता है. अभी एक होता है कंट्रोलिंग सीओ प्लस एफ आई ऑल्सो. तो सीओ प्लस एफ आई में क्या होता है ना कि लाइक बेसिकली कंट्रोलिंग फाइनेंस के साथ इंटीग्रेट किया जाता है. जैसे कंट्रोलिंग होता है, जैसे क्रेडिट कंट्रोल होता है, जैसे क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है. जैसे भाई इस बंदे को अगर मैं 30 दिन पे प्ले कर रहा हूँ तो इसको इतना ही क्रेडिट आएगा, और मतलब वो पेमेंट मुझे करने वाला है, तो अगर वो 30 दिन के अंदर करता है तो उसको इतना अपन छूट दे सकते हैं. एग्रीगेट बोलते हैं ना 2% कमीशन ऑफ, 15 डेज में देता है तो इतना. सो लाइक दैट. सो बेसिकली इंटीग्रेशन का मकसद ही ये रहता है कि एक डेटा दूसरे डेटा से कनेक्ट होकर अपने को एग्रीगेट रिपोर्ट जनरेट करके दे, जिसको अपन फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बोलते हैं. सो दैट्स इट.
That is how you generate a SAP financial reports and you manage and track customer and vendor data. So thank you. That's your time and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्रैक अ फ्यू टाइप्स ऑफ टैक्स टैक्स अकाउंटिंग एसेट अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए अलविदा